हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेंचमार्क करने वाले हैं जोटेक का 6050 सुपर और इंटेल का i5-9400F। देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको गेम्स में किस तरीके का FPS और ग्राफिक्स निकाल के देते हैं और कैसी रहने वाली है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की परफॉर्मेंस। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत कुमार, आप देख रहे हैं मॉर्फिक पीसी नेटवर्क। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर अपलोड 50,000 रुपीज़ की फुल सेटअप वीडियो नहीं देखी है तो जाके आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने एक 50,000 के अंदर एक फुल सेटअप बिल्ड किया है, जिसके अंदर हमने जो प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किए हैं आज उसकी हम बेंचमार्क करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको पीसी निकाल के देता है। तो हमने इस पर काफ़ी सारे मॉडर्न गेम्स प्ले किए हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन गेम्स से। तो नंबर 1 पे हमने जो गेम खेला है, तो सबसे पहले जो पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं वो तो इंटेल का i5-9400F, साथ ही साथ ग्राफिक्स लगाया हमने 6050 सुपर RTX 6050 सुपर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है। 2 रैम यूज़ किए हैं हमने, 8 GB की ड्यूल स्टिक यूज़ किए हैं 2666 GHz की, और बेंचमार्क वीडियोज़ आपके सामने ये रही।
nearby. Recon flyover! Losing Charlie. Cluster strike is overloaded. Enemy two objectives secure. Securing Alpha. We're losing Charlie. We are dominating the enemy. This is Bravo. I'm taking fire! तो इस बिल्ड पर रहकर आप यानी कि सारे ही मॉडर्न गेम्स वेरी हाई सेटिंग पे काफ़ी सॉलिड एफपीएस और काफ़ी मतलब हाई ग्राफिक्स पर इस बिल्ड के संग आप रहकर सारे गेम खेल सकते हैं। तो कैसी रही आज की ये बेंचमार्क वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले शानदार से टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल के संग जुड़े रह सकते हैं क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी सारे पीसी बिल्ड लाने वाले हैं। तो थैंक you।